Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to Radio and THS. This is your host RJ Mariam and you are watching Radio and THS. Dear audience, today we are honored to have a special guest with us. He is a teacher, a trainer, life coach, and a motivational speaker. And guess what? He is none other than Mr. Perfectionist Tanveer sir. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम मरियम थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे इस रेडियो एंड THS में तशरीफ ले आए. बहुत शुक्रिया मरियम Well, audience, today we are going to talk about an interesting topic, and that is goal setting, its concept, types, and its importance in our life. So, right, sir? या ऑफ कोर्स So, shall we get started? लेट्स गेट द बॉल रोलिंग Okay. So, we will start this session with a basic question, and the question is, what is a goal? Alright, so let's start with this basic question. But before we start discussing this question, I would like to make some points clear to our dear audience. तो आपसे यही गुजारिश है कि जो ये प्रोग्राम है ये आपके लिए है, आपके बच्चों के लिए है, जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स है उनके लिए है, कॉलेज स्टूडेंट्स है ये उनके लिए भी है, और जो यूनिवर्सिटी पास आउट्स है वो भी इस प्रोग्राम से बेनिफिट ले सकते हैं. एंड आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप शुरू से आखिर तक इस प्रोग्राम को देखें, तभी आपको इससे बेनिफिट हो सकता है. So Mariam, let's get back to your first and very basic question, that is, what is a goal actually? Well, a goal is something that we are not trying to achieve. It's like a target, an objective. When we set a target to achieve, we allocate some time to it. That makes it a goal. तो गोल कुछ ऐसा कोई मकसद होता है जो हम चाहते हैं कि हम किसी मुअय्यन वक्त में हम उसे पूरा करें, लिमिटेड वक्त में उसे हम पूरा करें. तो ये एक बेसिक डेफिनेशन है गोल की. Yes. Okay, right, sir. Do goals vary from person to person? Are there any types of goals? Of course, Mariam, there are different types of goals. For example, there are types of goals as per the areas of life. Goals हो सकते हैं, like we can have professional goals. For example, I am a teacher, I am a trainer. तो मेरे भी कुछ goals हैं that are connected to my profession. For example, I would like to grow professionally, financially in my profession. For example, जिस लेवल पे मैं इस वक्त हूँ अपने प्रोफेशन में, तो मैंने गोल सेट किए कि आफ्टर अ मंथ, आफ्टर 2 months और आफ्टर अ ईयर, तो मैंने एक गोल सेट किया है कि मुझे किसी लेवल तक पहुंचना है. तो ये दिस इज माय प्रोफेशनल गोल्स. एंड गोल्स कैन बी रिलेटेड टू वंस हेल्थ एंड वेलनेस एज वेल. फॉर एग्जांपल, अगर किसी का वेट 80 kgs है ना, तो अगर वो चाहते हैं कि वो 10 kgs जो है वो लूज करें, they want to shed 10 kgs, and they set a deadline for it. For example, they set a time limit of 2 months for it. They want to achieve it in 2 months. So this becomes a goal, and this goal is connected to their health and wellness. Similarly, we have career goals, financial goals. For example, अगर मैं आज monthly 50,000 कमाता हूँ, तो I can set a goal to make 1 lakh, 2 lakhs, 1 million, 2 million per month. Alright? तो ये फाइनेंशियल जो है ना वो गोल हो सकता है. गोल्स कैन बी स्पिरिचुअल एज वेल. फॉर एग्जाम्पल, जो मेरी स्पिरिचुअल लेवल इस वक्त है, जो मेरा कनेक्शन विद गॉड है, तो मैं गोल सेट कर सकता हूँ आफ्टर अ मंथ, आफ्टर अ ईयर, 5 years और अ डेकेड मैं स्पिरिचुअली ग्रो हो जाऊँ, मैं कुछ अचीव करना चाहता हूँ spiritually. It can be a spiritual goal. And goals can be educational as well. We have educational goals. For example, right now, if I ask you, are you preparing for something? Yes, I'm preparing for exams. For exams of which class? 8th standard. Of course. We have some students among our audience who are preparing for their 10th class examinations. तो कोई नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहा है. तो ये जो सारे गोल्स सेट कर रहे हैं, ये एजुकेशनल गोल्स है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कल सुबह उठेंगे और आप डिसाइड करेंगे कि टुडे आई हैव टू लर्न एंड रिवाइज 3 chapters of English
सब्जेक्ट। तो आपने फॉर एग्जांपल आपने सोचा मैं जूलियस सीजर नंबर 1, नंबर 2 Follow Polo the the King of King of Games, Poem. and a poem, let us say Meeting Poets. So this can be your educational goal, and you will try your utmost to achieve this goal by the evening before going to bed. Similarly, for example, if some of us or some in the audience want to qualify any entrance like NEET, Yeah. this can be an educational goal also. Goals. The goals vary from person to person. They Person. vary from areas of life, and we have different types of Types goals. of Some types of goals as per the duration, as per time duration. तो टाइम के हिसाब से भी गोल्स फिर वेरी करते हैं. As per time duration, we have three types of goals. How many? We have three types of goals. Number one, first is short-term goals. Second is Midterm goals. of course, you got to try. Yes. Mid-time goals, and the third is long-term goals. Now, let's explain them one by one. Number one is short-term goals, and मैं कह सकता हूँ कि short-term goal वो goal होता है that we can achieve within a year, all right? And we allocate a year, a month, 2 months to achieve this. It can be a goal that we want to achieve within a day. Day wise goal भी हो सकता है. ये आता है शॉर्ट टर्म गोल में. ये वही मैं फिर से एग्जांपल दूंगा आपको कि सुबह उठे and you decided to learn 3 chapters, तो ये आपका शॉर्ट टर्म गोल हो सकता है ना. तो या फॉर एग्जांपल आपने डिसाइड किया कि दिस ईयर in 2024 आप जो है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 2023 में 90% मार्क्स स्कोर किए थे, तो इस साल आप बराबर 100% मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं. This can be your short-term goal. You want to achieve it within a year, and it's possible. Now, second is midterm goals. Midterm goal. Yes, midterm goals are those goals जो हम अचीव करना चाहते हैं या जो हम अचीव करते हैं विद इन 4 years, 4 साल तक. तो हम 4 साल की जो है डेडलाइन इसको देते हैं टू अचीव दिस. फॉर एग्जाम्पल इफ सम ऑफ अस, अगर हमें कोई इस वक्त 10th का स्टूडेंट देख रहा होगा, इफ ही और शी वांट्स टू क्रैक नीट, तो इसके लिए उनको कम से कम 4 साल तो लगेंगे ना. तो ये उनका जो है मिड टर्म गोल हो सकता है. राइट. एंड नाउ नंबर 3 इज लॉन्ग टर्म गोल. या लॉन्ग टर्म गोल्स आर दोज गोल्स जो हम अचीव करते हैं, जिनके लिए हम टाइम सेट करते हैं 5 to 15 years. ठीक है, ये लाइफ टाइम गोल्स होते हैं, बड़े गोल्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू बिकम अ फुल फ्लेज्ड एंड वेल वर्स्ड स्कॉलर, you need 5, 10, 15 or more than 15 years for it. All right, it won't happen overnight. And if you want to become, for example, a scientist, a business tycoon, so you won't become a billionaire or a millionaire overnight. That's why they say, in order to become an overnight success, you had to spend or sacrifice thousands of nights for that. तो ये जो लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स, ये 5 से 15 साल में हम अचीव करते हैं. Okay, thank you, sir. Now, why is goal setting important? Why we students, professionals, mothers at home set goals? अगर हमें एक गोल अचीव करना है, हमारी जिंदगी में इसका मकसद क्या है, इसकी अहमियत क्या है? Of course, Mariam, it's a $1,000,000 question. It's a great question. बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा कि गोल्स क्यों इम्पोर्टेंट है. What is the significance of goals in our life? Look, Mariam, without setting goals, जो हमारी जिंदगी है ना, ये बेमकसद जिंदगी बन जाती है. It becomes an aimless life, a life that doesn't have any direction, any objective. तो aimless जो लाइफ होती है ना, बेमकसद जिंदगी, ये बोझ होती है. और ये इंसान फिर सबको बोझ लगता है, घर वालों को भी बोझ लगता है, माँ बाप को बोझ लगता है. फिर सभी कहते हैं तुम तो धरती पे बोझ हो. आप फिर मांगते भी है, अल्लाह इसको उठा ले इस धरती से. बिकॉज दीज पीपल डोंट सेट गोल्स एंड दे डोंट हैव एनी एम इन देयर लाइफ. सुबह वो उठते हैं जब उनके माइंड में कुछ नहीं होता है करने को, एंड दे आर ब्लैंक, दे डोंट नो हाउ टू स्पेंड टाइम. तो दे स्पेंड टाइम अनइंटेंशनली. वो इंटेंशनली लिव नहीं करते हैं. ठीक है, वो ऐसे ही टाइम स्पेंड करते हैं, आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, काम पे जाते हैं, सो जाते हैं. दे डोंट हैव एनी we can say well defined and noble purpose or goal in their life. तो गोल क्या करता है? गोल beautifies your life.
गोल इंसान को कॉन्शियस बनाता ऑफ है। कोर्स मेक्स यू कॉन्शियस। हम्म, आप फूंक फूंक के कदम रखते हो। आप कहीं पे जाओगे आपको पता होती है, आई स्पेंड फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू विजिट योर मैटरनल्स, आपको अंकल के यहाँ जाना है, तो आपको पहले से ही पता होती है आई विल गो देयर, आई विल जस्ट स्पेंड 1 hour देयर और 1 day 1 night देयर, देन आई गेट बैक टू माय स्टडीज और गेट बैक टू माय थिंग। तो आप कॉन्शियसली हर एक काम करते हो। आपको इट 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 मेक्स यू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम, वैल्यू ऑफ लाइफ। तो आप हर चीज कॉन्शियसली करते हो। एंड वन मोर थिंग, जो गोल है, इट इट यू नो इट ब्यूटिफाइज योर लाइफ, इट एड्स टू द वैरायटी इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में वैरायटी आती है। एंड लाइक दिस से वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। अगर आपकी जिंदगी में कलर्स नहीं है, जब आप गोल सेट करते हो ना, तो आप मॉर्निंग में जब आप उठते हो, को पता होती है मुझे कैसे दिन गुजारना है, मुझे क्या क्या अचीव करना है। अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो आपका दिन बोरिंग हो जाता है, कलरलेस दिन हो जाता है। कलरलेस दिन होता है। तो कितने इंपॉर्टेंट है, what's the significance of goals in our life and why should we set goals? इसके लिए let me quote some incidents, some stories that are full of messages। तो हमारी ऑडियंस के लिए भी इनमें बहुत एक बड़ा पैगाम है। फॉर एग्जाम्पल, मैं स्टार्ट करना चाहूंगा एक स्टोरी से। फॉर एग्जाम्पल, देयर वाज अ यंग मैन एंड ही वाज ड्राइविंग हिज कार एंड ही हॉल्टेड एट एन इंटरसेक्शन, क्रॉस रोड पे वो पहुंच गया जहां से बहुत सारे रास्ते होते हैं चौराहे पे। एंड ही स्टॉप्ड and there was an elderly man and he asked him, sir, could you please tell me if I take this way, suppose दाएं दाया रास्ता जो राइट साइड से रास्ता था, if I take this way, where would this road take me? ये मुझे कहाँ ले जाएगा, मैं यहाँ से कहाँ पहुँच सकता हूँ? And that elderly gentleman, he asked him, before answering his question, he asked him, well gentleman, well young man, before I ask before I answer your question, let me ask you, where do you want to go? आप जाना कहाँ चाहते हैं? तो वो वहां से बोलता है, नौजवान बोलता है, वेल सर आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है मुझे जाना कहाँ है। तो जब ये बुजुर्ग ये सुनते हैं कि इसको नहीं पता है इसको जाना कहाँ, देन ही सेज, वेल देन इट डजंट मैटर व्हिच वे यू टेक, आप चाहे दाएं साइड से जाओ, बाएं से आगे, व्हाटएवर, टेक एनी वे, आपको तो पहुंचना कहीं पे नहीं है। You don't have any definite route, any destination in the mind. So you can take any route, any way, any road, doesn't matter. इसका कोई मकसद ही नहीं है, तो मंजिल नहीं है आपके जहन में, तो आप करोगे क्या जान के कि ये रास्ता कहाँ जाता है। सिमिलरली जो गोललेस लाइफ होती है ना, वो ऐसे ही होती है। नंबर 2, सपोज मरियम, which footballer do you like? Messi? Yeah, everybody loves Messi and Ronaldo. Yeah, of course. Suppose a football match is going to take place, all right? And the stadium is jam packed, it's houseful. बहुत हजारों में लाखों में तमाशाई आए हैं to watch their heroes, their footballers, famous footballers, Ronaldo and Messi. For example, एक टीम में one is led by Messi, Argentina, for example, is led by Messi, and second is led by Ronaldo. पोर्चुगल फॉर एग्जाम्पल, ये इसको कैप्टन कर रहा है कौन? हाँ। सपोज जस्ट बिफोर सम सेकेंड्स, मैच के स्टार्ट होने से कुछ सेकंड पहले एक शख्स आता है एंड ही टेक्स अवे द गोल पोस्ट्स। वो गोल पोस्ट लेके भाग जाता है। व्हाट विल हैपन टू द मैच? कम ऑन, आंसर मी। Match will not happen. Why? Because there's no goal there. Of course. So they cannot, they cannot progress. They cannot progress, of course, and they cannot count goals. They cannot, count scores without goal posts. Similarly, यही उस जिंदगी का हाल होता है, उस इंसान का हाल होता है जो एमलेस, गोललेस लाइफ गुजारता है। तो अगर आपके पास पैशन है बट डायरेक्शन नहीं है, so passion without direction is like wildfire that leads to what? Frustration. अंदर पैशन है लेकिन डायरेक्शन नहीं है, पता नहीं है पैशन कैसे मुझे चैनलाइज करना है, स्पेंड करना है। एंड वन मोर थिंग, फॉर एग्जांपल, इफ आई आस्क यू, वुड यू लाइक टू सिट इन अ बस और अ ट्रेन और एन एरोप्लेन, जिसके बारे में आपको नहीं पता होगी कि वेयर दैट ट्रेन, दैट कार इज गोइंग, क्या आप उसमें बैठना पसंद करोगे?
अगर मैं पूछूंगा क्यों, बिकॉज ऑब्वियसली योर कोई आंसर विल बी डायरेक्शन नहीं है उसकी, डायरेक्शन तो नहीं मैं है, वहाँ, हाँ इट इन्वॉल्व्स रिस्क, हाँ। है ना? तो देन लेट मी आस्क टू ऑल ऑफ अस watching out there, हम्म if you can't, if you don't like to sit in a bus जिसके बारे में आपको नहीं पता है where it's going, हाँ, then how can you spend a life without knowing what to do, without having a definite and well defined goal? विदाउट आप हैविंग एनी जिंदगी कैसे पर्पस। गुजार सकते हैं ऐसे? हाँ, आपकी जिंदगी, ओ माय गॉड, वाओ, किसी और की जिंदगी नहीं, आपकी जिंदगी. सो हाउ कैन यू स्पेंड अ लाइफ, योर लाइफ, विदाउट सेटिंग गोल्स? एक और चीज, अब मैं चाहूंगा कि जो हमारी ऑडियंस है, पिक्चर इन योर माइंड, पिक्चर इन योर माइंड a ship. You are in a ship, but you lack destination. A ship without destination. Now, what will happen? You don't know where to go. You don't have any map. Aimless, you would just drift aimlessly, and eventually you are destined to drown, to sink, है ना? तो because it's a journey into unknown, आपको नहीं पता है कहाँ जाना है, तो कहाँ eventually जाना waves आएंगी, तूफान आएगा, and you will sink, you will drown. Similarly, a person who doesn't have a definite goal, well-defined goal, eventually ends up wasting his life, ends up drowning into failures. बहुत सारी चीजों में. इसी तरह मैं चाहूंगा कि आप इस बारे में सोचें. फॉर एग्जाम्पल, एक मैराथन होने वाली है, बड़ी रेस होने वाली है, एंड वर्ल्ड क्लास एथलीट्स दे आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन दैट मैराथन. लेकिन क्या होता है कि फिनिशिंग लाइन ही नहीं है. वुड यू लाइक टू रन अ मैराथन विदाउट फिनिशिंग लाइन? हाउ इज इट पॉसिबल देन? इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, लाइफ विदाउट गोल्स इज लाइक अ मैराथन विदाउट फिनिशिंग लाइन. आप कितना भी दौड़ो, वो फुटबॉल मैच याद है ना, कितना भी खेले रोनाल्डो और मेसी, दिन भर वो खेले, हाँ, लेकिन उसका रिजल्ट जीरो आने वाला है, जीरो उस जीरो goal आने में। वाला है. इसी तरह, a marathon without a finishing line is a Nothing. waste of time, isn't it? Yes. So how we should set goals, right? How we should set goals? What strategy should we adopt? Yes. Once again, it's a very very good question, Mariam. Look, we are humans and we tend to forget things. तो जब हमें गोल सेट करना हो, तो I would like to share a golden piece of advice with you, our dear audience. Mariam, जब आपको गोल सेट करना हो, when you have set some goals, you should sit down all by yourself in solitude, तन्हाई में बैठे, and make up your mind. Think what you want to do. आपकी inclination, आपकी propensity किसकी तरफ है, आपका रुझान किसकी तरफ है. Once आपने क्लियर किया कि what you want to do with your life, which goals do you want to accomplish and achieve in your life, उसके बाद क्या करें? Then write those goals down on a piece of paper. Sir, should we write the goals? Of course, we should write the goals. मैं बताऊंगा क्यों हमें goals लिखने चाहिए. तो या मुझे एक बात पे याद रखना, why should we write goals? तो आप एक piece of paper पे goals लिखें and carry that piece of paper around wherever you go. Carry it around and read those goals. Read that piece of paper at least twice a day. Read it time and again. तो जब आप उसे बार बार पढ़ेंगे, तो आपको रिमाइंड हो जाएगा कि मुझे करना क्या है, मुझे पाना क्या है. So you'll be reminded continuously and consistently. इस तरह आप भूल नहीं जाओगे. कॉन्शियस भी रहेंगे. You'll be conscious, of course. And one more thing, your goals should be smart. आपने मुझे पूछा goals कैसे होने चाहिए? Your goals should be smart. Smart. Of course, goals should also be smart. हम कोशिश करते हैं कि to look smart, so हम तहदीद आते हैं and many other things, but our goals should also look smart. And you may ask me, sir, what does smart stand for? Yes, that's a question. Yeah, that's a million-dollar question. So what does S stands for? Then M stands for? Yeah, I'll tell you. Look, Marian, the acronym SMART. Look, in it we have the first letter, that is S. S stands for specific. That means your goal should be specific. जो भी आप गोल सेट करोगे, you must know. For example, आपने गोल सेट किया कि at the end of this year, I want to make $1 million. मुझे 1 million जो है ना कमाना है, 1 लाख कमाना है, बैलेंस में रखना है, रिजर्व रखना है. तो ये आपने गोल बनाया. तो आपको ये स्पेसिफिक करना है कि how much money, what's the amount that you want to accomplish, you want to achieve, you want to save 1 million, 10 million, 1 billion, 10 billion, 1 lakh, 2 lakh. ये स्पेसिफिक होना चाहिए. ये नहीं कि मुझे I want to make money. No, ask yourself how much money. So you must have clarity. Your goals must have clarity. You must know what you want. ठीक है? And second is M. M stands for measurement. So measurement का मतलब क्या है कि आपका गोल ऐसा होना चाहिए कि आप उसे मेजर करो. For example, you set a goal and after 2 months, if you look back कि मैंने कितना प्रोग्रेस किया है, growth कितनी हुई, you should be able to measure that goal कि मैं इस वक्त किस स्टेज पे हूँ. Am I getting closer to my goal, to my destination or not? अगर ऐसा नहीं है, then your goal is a waste of time. And number 3 is A means achievable, realistic. Your goal should be realistic. देखो, goal अगर बहुत मुश्किल भी हो, तो वो अच्छा है, वो आपको ज्यादा मोटिवेट करेगा. And it should not be impossible. For example, you might have seen mountains here in Downriver. We have mountains. If you set a goal to move that mountain, ठीक है, उसको वहां से उठाएं and you want to just place somewhere else. या आपको पसंद नहीं है वहां पे वो mountain, आप कहीं और पे जाना, it is not impossible for you. वहां से उठाना है जैसे कि हम, हाँ, that means goal should be achievable. Doesn't matter whether it's tough, whether it seems impossible. लेकिन अगर वो है, आपको लगता है कि मैं अचीव करूं, then only set the goal. Then only set. जो आपकी मतलब इसमें capacity में है, human capacity, set that goal. And we have relevant goals. Goals should be relevant. And lastly, T stands for time bound. Goals should be time bound. What does it mean? हाँ, this is a question, isn't it? Time bound का मतलब, T का मतलब क्या है? T stands for time bound. देखिए, आप जब गोल सेट करें ना,
तो if you want to accomplish your goal और आप वक्त ज़ाया नहीं करना चाहते हो, you should allocate some time, some specific fixed time to your goal. For example, आपने कुछ अचीव करना है, ठीक है? आपने कुछ अचीव करना है, आपको आपको आपने गोल सेट किया कि मुझे प्रोग्रेस करना है अपनी स्टडीज में, तो आपको इसे टाइम सेट करना पड़ेगा कि मुझे 1 साल में, 2 साल में, 1 महीने में, 2 महीने में ये अचीव करना है, ठीक है? तभी आपका गोल जो है वो पूरा हो सकता हाँ है. मैंने आपको बोला कि रिमाइंड मी हाँ, समथिंग. should be write the goals. Of course, this is a $1 million question, Mariam. Look, your question is, should we Write the goals. write goals or not? Of course. तो मैंने पहले बोला आपको what's the importance of writing goals. देखिए, in 1985, a Hollywood actor, a comedian, his name was Jim Carrey. He's a famous character. तो बच्चों को बहुत पसंद आता है जिम कैरी. ही इज वेरी फेमस, ही इज वेरी वेल नोन. तो in 1985 he sets a goal. Actually, you know what he does, Mariam? He writes a $10 million check to himself. At the time he was just around 23 years old in 1985. तो वो एक गोल सेट करता है, उस चेक में वो $10 million लिखता है कि after at the end of 10 years or within 10 years I have to achieve. I have to achieve $10 million. मुझे किसी ऐसी मूवी में काम करना है जिसके लिए मुझे कितना पैसा मिलेगा? $10 million. And what he does, he says in the interviews also, it's on the record also there, you can watch on YouTube. So what he does, वो काम करता है कि just a second please. Okay. Wherever he goes, he keeps that check in his wallet and he keeps looking at it, and this keeps reminding him That I about have his to goal. achieve this. Yeah, of course. It makes him conscious again and again. And you know what happened in 1995. He signs a movie, and the name of the movie is Dumb and Dumber. It's a hilarious movie, all right? It's a hilarious movie. It will burst your bubbles. It's so hilarious. So वो sign करता है movie, and how much he gets for it? $10 million. Oh my god. That's the power of writing goals. इसलिए मैं कह रहा, there was a survey done. तो वेस्ट में एक सर्वे किया गया कि people who set goals and do not write them down and people who set goals and write them down, तो वो कितने परसेंट है वगैरह और उनमें क्या डिफरेंस रहती है. तो ये देखा गया कि only 3% people set goals and then write them also, और वो 3% लोग ऐसे देखे गए कि वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहे हैं अपनी जिंदगी में in terms of finance, wealth, status, knowledge, education, whatever. उनने बहुत कुछ अचीव किया अपनी जिंदगी में क्योंकि उनने अपनी गोल्स को लेकर. One more thing, have you heard about Bruce Lee? Bruce Lee, yeah. He was a great actor. Martial art भी बड़े थे. And in 1970s, around 1970s, you know what he does, Mariam? Bruce Lee writes himself a letter. He writes himself a letter. And he gives the title The Secret. The Secret. And there's a movie, by the way, by this name, The Secret. And in the coming episodes, we'll be talking about that also. So he writes himself a letter and he calls it The Secret. And in that letter, he writes himself that Bruce Lee is going to be one of the best actors in the coming time of America. ठीक है, वो खुद अमेरिका से नहीं थे, शायद वो चाइना से थे. इस वक्त मुझे पूरा याद नहीं है. So he sets this goal and he wants to be the best actor in US. Yes. तो वो क्या करता है कि he keeps that letter in his pocket. It wears out, लेकिन वो देखता रहता है उस लेटर को बार बार. And guess what? There comes a time when he accomplishes his goal, and when he becomes the best actor in US. So this is the power of writing goals. Yeah. Next question. Thank you, sir. Okay. Why don't most of the people set goal? मैंने अक्सर देखा है कि लोगों की जिंदगी में अक्सर लोगों की जिंदगी में कोई ऐसा मकसद नहीं होता. I have also observed कि most of the people, they just work hard, they follow the same routine, but they don't have any well-defined goal in their mind. What are the things उनको रोकती है वो? Of course, Mariam, this is a $1 trillion question. Look, we had discussed
concept of goal setting, types of goals, importance of Importance. goals, and significance of writing goals, this and that. We have discussed so many questions so far, and this question deserves an explanation too. Look, the question is why don't Most of the people set goals. set goals, or there can be a question also, why don't people set lofty goals? बड़े goals क्यों नहीं set करते हैं? Look, there's a reason for it, Mariam. The reason is people who lack desire, they are the people who don't set goals. जिनकी जिंदगी में कोई ख्वाहिश नहीं होती है ना, जिनके दिल में कोई ख्वाहिश ही नहीं होती है। ख्वाहिश दो तरह की हो सकती है, अच्छी ख्वाहिश, नेक ख्वाहिश और बुरी ख्वाहिश। बुरी ख्वाहिश की बात नहीं कर रहे हम, अच्छी ख्वाहिश की अच्छी बात कर रहे ख्वाहिश की हैं। बात। सो दीज आर द पीपल हु लैक डिजायर, दैट्स व्हाई दे डोंट सेट गोल। वो कभी सोचते ही नहीं है कुछ, वो कुछ चाहते ही नहीं है, उनके दिल में कोई ख्याल भी नहीं आता है, कोई ख्वाहिश भी नहीं पैदा होती है। दैट्स व्हाई दे डोंट सेट गोल्स। एंड नंबर टू, people don't set goals because of some limiting beliefs. Limiting belief क्या होता है कि beliefs that limit us from reaching our full potential. They are the goals. अल्लाह ने हमें एक पोटेंशियल रखा होता है हमें, तो अगर हम उसको उस पर वर्कआउट करें, उसको आइडेंटिफाई करें, उसको वर्कआउट करें, वी कैन रीच टू दैट पोटेंशियल। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनके पास लिमिटिंग बिलीफ्स होते हैं, एंड वो फिर उस पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाते हैं। एंड लिमिटिंग बिलीफ्स मीन्स बिलीफ्स और थॉट्स दैट आर सेल्फ डेप्रिकेटिंग, लाइक ये सोचना कि आई एम नॉट वर्थ इट, I don't deserve success, I don't deserve fame, I don't deserve money, I don't deserve wealth. Alright? मैं inferior हूँ। खुद के दिमाग में वो वो थॉट्स लाते हैं, सेल्फ डेप्रिकेटिंग थॉट्स। वो खुद को ही belittle करते हैं, ठीक है, नीचा दिखाते हैं खुद ही, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम होता है। दैट्स व्हाई दे डोंट सेट गोल्स। अगर वो सेट भी करते हैं, वो छोटे गोल सेट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये लोग ऐसे होते हैं कि जो कोशिश करते हैं कि बस क्लास 4th की नौकरी मिल जाए, कहीं पे क्लर्क पोस्ट मिल जाए, कहीं पे बस हाँ एडजस्ट हो जाए कहीं पे, तो बस ये वैसे ही गोल सेट करते हैं। एंड लिमिटिंग बिलीफ्स जो है, इसके बारे में मेरे जहन में इस वक्त एक चीज आई, वी कॉल दैट द एलिफेंट रोप. The elephant rope. Yes. Elephant rope, actually, yeah, I will tell you what is this. Look, a man was passing by some elephants one day, and he was astonished to see some elephants, young, powerful, majestic elephants, tied by a small rope. ठीक है, तो छोटी सी एक रस्सी से वो बंधे हुए थे। तो वो जो रस्सी थी वो बहुत छोटी थी, लेकिन वो उसे तोड़ नहीं रहे थे, वो उस रस्सी से भाग नहीं रहे थे। एंड वहां पे उनका ट्रेनर भी था उन एलिफेंट्स का, एंड दैट मैन वॉक्ड अप टू दैट ट्रेनर एंड ही आस्क्ड हिम, सर, मैंने ये देखा, these elephants, they are tied by a small rope, they have this power and strength to break away from these ropes, लेकिन why don't they do it? ये क्यों नहीं भाग रहे, ये क्यों इसी सर्कल में रहते हैं, इससे बाहर क्यों नहीं जा रहे हैं? हालांकि इनमें पोटेंशियल है, ये इससे जा सकते हैं। ऑफ कोर्स, जो जितनी बड़ी ये रस्सियां हैं मजबूत है, इससे 1000 गुना जो रस्सियां हैं वो तोड़ सकते हैं। सो द ट्रेनर आंसर्ड, look, well, when they were very young, very small, we used the same kinds of ropes to tie them, है ना? And as they grew up, they are conditioned to believe that they cannot break away from these ropes. तो उनका माइंड कंडीशन हो जाता है, उनके माइंड में एक बिलीफ बैठ जाता है कि हम इस रोप से भाग नहीं सकते हैं, इसको तोड़ नहीं सकते हैं। तो similarly, many of us go through life and we keep hanging on to a belief that we cannot do something simply because we failed at it once before. कि कभी हमें कोई नाकामी मिली है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं क्योंकि हम एक बार नाकाम हो चुके हैं। तो जो हमारा वो दायरा होता है, वो सर्कल होता है, और उस सर्कल से हम बाहर नहीं निकलते। ये होते हैं लिमिटिंग बिलीफ्स, ये होती है द एलिफेंट रोप। एलिफेंट्स कितने बड़े ताकतवर ये है स्पीशीज, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन छोटी सी रोप उनको बांध के रखती है, बिकॉज दे हैव देयर लिमिटिंग बिलीफ। सिमिलरली, some of us are there
who are having these self-deprecating thoughts, limiting beliefs, and that's why they don't desire or they don't set goals to achieve something in their life. Yes. Okay, thank you. So, sir, how has a person's attitude or mindset to do something with this goal setting? क्या लोगों का वो जो attitude है उसका क्या role रहता है हमारी इस goal setting में? Once again, it's a very important question, Mariam. And of course, I can say with conviction that one's attitude has a lot to do with one's goal setting or one's achievement, one's success in life. तो ये बिल्कुल इसका एक बहुत बड़ा रोल रहता है एटीट्यूड का. लोग हमारे पास जो एप्टीट्यूड होता है वो भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन एटीट्यूड का होना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है. देखिए, आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड दिस. अब मैं अपनी ऑडियंस से ये कहना चाहूँगा कि once there was a balloon seller and he was selling balloons filled with helium, and helium made those balloons fly in the air. It was his business trick, है ना. जब वो balloons आसमान में उड़ते थे तो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो आते थे, है ना, and he would make a good profit. So once he felt that something is tugging his shirt, and when he turned around he saw a black boy, a little 4-year-old black boy tugging at his shirt. He was just pulling his shirt. So he asked him, well, my dear sweetie, what do you want? And that 4-year-old little black boy asked the balloon seller, uncle, just tell me, will that pink balloon go into the air? The balloon seller replied, of course, my dear little one, it will go into the air. Again he asked him, uncle, will this red balloon go into the air? These little kids have curiosity. They want to know. They are very inquisitive. So he asked him, uncle, will this balloon go up to the air? He said, of course, this red one will also go into the air. Again he asked, uncle, will this blue balloon also go into the air and fly high? Again he replied, yeah, of course, sweetheart, it will also go high and fly in the air. And then again he asked, and this time he asked with more curiosity, and there was brightness in his eyes, in that little boy's eyes. He asked again, uncle, will this black balloon also fly in the air? Now, the exasperated, the frustrated balloon seller, he replied, well, wait a second, my dear little boy. He tells him, look, the balloons do not go up in the air based on their size, shape, or color. The balloons that go high into the air, they go into the air based on what is filled inside them. That's the helium. Similarly, I can say we're all different colored balloons, different balloons. We have different sizes, different shapes, different colors, with different abilities, different skills, different background, different talents, different capabilities. We all have a different outside, different color. But remember one thing, Mariam, and remember one thing, dear audience. Everybody and whosoever has reached to the zenith of success and has made a mark in this world hasn't ever done it based on the color of their balloons, based on their background, hasn't never done it based on their wealth, hasn't never done it based on these things. Whosoever has made a mark in their life and has contributed something towards this world has done it based on what is filled inside him or her. That's their attitude. That's why they say it's not the aptitude, but it's not the aptitude, but the attitude that decides your altitude. The attitude is very important. And one more thing, I would like to add something more to one of your questions. बहुत अहम क्वेश्चन पूछा आपने. तो आपने इससे मुझे पहले बोला, सर, why don't most of the people set goals? तो मैंने क्या बोला था? Because of lack of desire, limiting beliefs, narrow thinking is also there. Limiting belief also means, it also means
नैरो थिंकिंग. फॉर एग्जाम्पल, मरियम, देखो, जो हमारा बैकग्राउंड होता है, our background, our environment, the people who surround us, our friend circle, our upbringing, ये सारी चीज़ें, ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी हमारे यू नो हमारी थिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एंड दे आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल एंड रिलेटेड टू आवर गोल्स एंड टू आवर सक्सेस व्हाटएवर वी अचीव इन लाइफ. सो जो नैरो थिंकिंग है उसका भी एक बहुत बड़ा रोल रहता है किसमें, गोल Goal सेटिंग में. फॉर setting. एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ अस, ज्यादातर लोग जो गांव देहात से होते हैं, उनके गोल बहुत छोटे होते हैं, है ना. हम भी गांव देहात से हैं, तो अक्सर हमारे गोल बहुत छोटे होते हैं क्योंकि हमारी थिंकिंग छोटी होती है. इसके लिए मैं आपको ऐसे समझाऊंगा. लुक, once upon a time there was a fisherman. He was catching fish, all right, and a person was looking at him, all right. He was watching him catching fish, and when this fisherman would catch big fish, तो जब वो बड़ी मछली पकड़ता था, he would just he would just throw it back into the river. ठीक है. And when he would catch small fish, he would just take it and keep it in the bag. And the person watching him, he was perplexed. He was bewildered, confused, of course. And he walked up to him after some time and he just asked him, "Come on, man, are you in your right state of mind? You are throwing away the big fish that can make you big profit, and you are just keeping small fish. Why is it so?" तो उस फिशरमैन मैंने कहा, विद अ सॉरोफुल फेस, द सॉरी फेस, बोला कि एक्चुअली मैं इसलिए छोटी मछलियां रखता हूँ बैग में, घर ले जाता हूँ और बड़ी मछलियों को पानी में फेंकता हूँ क्योंकि मेरे घर में आई हैव अ स्मॉल फ्राइंग पैन. मेरे घर में छोटा बर्तन है, छोटी कढ़ाई है, उसमें बड़ी मछलियां नहीं आती है, नहीं पूछती है. सेम इज केस विद आवर थिंकिंग. नैरो थिंकिंग की वजह से हम बड़े गोल सेट नहीं करते, इसलिए जो हम इंटर रिलेटेड है ना कि अगर थिंकिंग हमारी छोटी है तो हमारे गोल्स भी छोटे हो सकते. बेशक, बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली गॉट इट राइट. तो इसीलिए हमारा बर्तन भी छोटा होता है. अल्लाह फिर हमें अपनी सोच के हिसाब से नवाजते हैं. जितनी बड़ी सोच उतना बड़ा गोल, जितनी छोटी सोच उतना छोटा, उतनी छोटी सक्सेस, उतना छोटा गोल. इसी तरह लास्ट यहाँ पे हम फिर कंक्लूड करेंगे आज. मौलाना रूमी और शम्स तब्रेज़ की कहानी आपने सुनी होगी. Look, Maulana Rumi, he was a great scholar of his time. Once he was walking to the market and his followers, his admirers were just following him. तो वो सवारी पे थे and he was stopped by a very simple looking man. ठीक है. तो एक आदमी ने उसे रोका जिसका नाम था शम्स तब्रेज़ी, जो बाद में उनके उस्ताद बने, उनके शेख मुरब्बी बने. तो उनसे पूछते हैं दो क्वेश्चंस. नंबर वन, यू टेल, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू मिस्टर, यू आर द प्रोमिनेंट स्कॉलर ऑफ दिस एरिया. तो उसे पूछते हैं, ऑल राइट, आस्क मी. फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज ग्रेटर, मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम और बायजीद बिस्तामी. बायजीद बिस्तामी कौन? वो नबी नहीं होते, वो अल्लाह के वली होते हैं, वो एक सेंट होते हैं. तो अगर मैं आपसे पूछूं बड़े कौन है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या बायजीद बिस्तामी अलैहिस्सलाम, कौन है बड़े? Obviously, it's a simple answer. So Rumi said, obviously, Muhammad peace be upon him is greater. Then वो next question add on करते हैं इसमें, बोलते हैं, पूछते हैं, then tell me, why did Muhammad peace be upon him say, "Oh Allah, how great is your majesty, how glorious you are. I did not know you the way I should have known you. It's like सुब्हानका मा अरफनाका हक्का मारिफतिका." तो मैंने आपको उतना नहीं पहचाना जितना मुझे पहचाना था, जबकि बायजीद बिस्तामी ने कहा, या अल्लाह, हाउ ग्लोरियस आई एम, हाउ ग्रेट इज माई ग्लोरी, क्योंकि मैंने आपको जितना मुझे आपको जानना था उससे ज्यादा जाना, उससे ज्यादा पहचाना. तो फिर क्यों कहा उसने? दैट मीन्स वो बड़े हैं. जब मौलाना रूमी ये क्वेश्चन सुनते हैं, उनको चक्कर आता है, वो गिर जाते हैं. इट्स अ सब्लाइम क्वेश्चन, इट्स अ प्रोफाउंड क्वेश्चन. तो सिंपली मैं आपको समझा रहा हूँ, जब होश आता है तो फिर उसको आंसर करते हैं. वो रूमी थे, ग्रेट स्कॉलर, तो उसे आंसर करते हैं कि the thing is actually the reason why Bayezid Bistami said, "Oh Allah, I have known you more than I should have. I was supposed to know you." And Muhammad peace be upon him, हमारे नबी ने कहा कि या अल्लाह, मुझे उतना
मैं उतना नहीं पहचान सका। हाँ बिल्कुल। तो वजह ये थी क्योंकि हमारे नबी का जो बर्तन है, रिमेम्बर, पॉट, पैन, बर्तन, हमारे नबी का जो बर्तन वो बड़ा था। तो अल्लाह ने जब अपने कुर्ब की कुछ बूंदे हमारे नबी के बर्तन में डाली, तो हमारे नबी की प्यास बड़ी थी, बर्तन बड़ा था, हाँ। तो उनकी प्यास नहीं बुझी। तो ही वांटेड मोर, ही वाज मोर हंग्री, ही वाज मोर क्यूरियस। उनके अज़ाइम बड़े थे, उनका उनका दिल मुबारक बड़ा था, उनका बर्तन बड़ा था, इसीलिए वो और चाहते थे, वो चाहते थे मैं अल्लाह को और जानूं, और पहचानूं, और मारिफत हासिल करूं। वो एक समंदर की तरह थे। समंदर को बूंद से क्या हो सकता है? नथिंग। सिमिलरली, एंड दैट्स व्हाई बाय इज इट बिस्तामी सेड, ए अल्लाह मैंने ज्यादा पहचाना जितना मुझे पहचाना था। वजह ये थी क्योंकि उनका बर्तन छोटा था। अल्लाह की रहमत और कुर्ब की एक बूंद उसमें पड़ी, एंड ही गॉट ओवरवेल्म्ड एंड ही सेड दीस थिंग्स। उनको लगा बस मैं ही, हाँ बस इतना ही है। उनकी प्यास छोड़ी थी। मैंने कहा था ना, सोच छोटी तो कामयाबी छोड़ी, गोल छोड़ा। सोच बड़ी तो आपकी कामयाबी बढ़ी। तो अगर आपके अज़ाइम, आपकी सोच, आपके गोल्स, आपका पर्पस आपका बड़ा होगा, अल्लाह आपको वैसे ही नवाजेंगे। तो मैसेज इज दिस दैट वी शुड नॉट बी लाइक अ फ्रॉग। हमें कुएं का मेंढक नहीं रहना है, वो उस एलिफेंट की तरह नहीं रहना है अपने सर्कल में कि लिमिटिंग बिलीफ पे ही चले हम। Of course, we gotta just move out of our comfort zone and see the world. This world is full of opportunities waiting for us, जो हमारा इंतजार कर रही है। We should be like an eagle. ठीक है, जब भी ईगल को लगता है कि माहौल ठीक नहीं है, क्लाउड से ईगल राइज above over the clouds and flies, soars higher and higher into the skies. तो यही मैसेज रहेगी हमारी, कि जो हमारी ऑडियंस है वो गोल सेट करें अपने लाइफ के, और गोल जो है बड़े सेट करें, छोटे गोल नहीं, बड़े सेट और बड़ी सोच रखें ताकि उनकी सक्सेस भी अच्छी हो। आपको एक छोटा सा यहाँ पे नुक्ता मैं ऐड करूंगा। Have you heard about Prophet Sulaiman alayhi salam? He made a dua and it's there in the Holy Quran. तो दुआ में उन्होंने मांगा, ओ अल्लाह, grant me the kingdom nobody has ever had. ए अल्लाह, मुझे ऐसी सल्तनत अदा कर जो किसी को नहीं मिली और किसी को नहीं मिलेगी। तो अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की, और देखिए वो नबी थे, मांगा क्या? ऐसी सल्तनत जो किसी को नहीं मिली हो। तो हम जब दुआ करें तो छोटी छोटी चीजें क्यों मांगे? गोल सेट करें तो छोटा गोल क्यों सेट करें? डॉक्टर बनना ही है ना, तो गोल्ड मेडलिस्ट बने। तो अपना इंस्टीट्यूशन आपका होना चाहिए, ऐसे गोल्स आप सेट करें, ऐसे गोल्स आप सेट करें। तो जब अल्लाह के नबी ऐसी दुआ कर सकते हैं, तो हमें भी ऐसी दुआ मांगनी चाहिए। और हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उन्होंने हमारी तरबियत की है कि अगर आपको अल्लाह से कुछ मांगना, इफ यू वांट टू आस्क अल्लाह फॉर समथिंग, आस्क हिम फॉर जन्नतुल फिरदौस। छोटी मोटी जन्नत नहीं, द हाईएस्ट जन्नत है ना, जो जन्नत की आला ये जो है किस्म है, वो मांगो अल्लाह से। तो हमें जब भी गोल सेट करना हो तो बड़े गोल सेट करना। एंड देन दुआ इन कुरान जो हम हर नमाज में पढ़ते, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना। या अल्लाह, इस दुनिया में जो भी हसना अहसन चीजें हैं, खूबसूरत, बड़ी अच्छे मजेदार चीजें हैं, वो मेरे नसीब में रखिए, वो मुझे अता कीजिए। सिर्फ इस दुनिया में नहीं, आखिरत में भी जो भी कुछ भलाइयां हैं, खैर है, सबसे अच्छी चीज है, उनमें मेरा हिस्सा रखिए। That's what should be our approach. Thank you. Thank you so much, sir, for your thoughts. Well, audience, with this, we would like to stop here and call off today's program. So we request you to honor us with your sincere feedback. Keep praying, keep watching Radio NTHS. Khuda Hafiz. Bye-bye.